So once you understand how there is a control of blood pressure, if you are not aware about the physiology of control of blood pressure, you will never understand this anti-hypertensive drug. So what do you mean by blood pressure? That is nothing but the pressure exerted by blood on the wall of arteries and blood vessels. So that is a standard definition. But what is the formula? Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Cardiac output is nothing but the whatever blood that is being ejected after the left ventricular contraction. That is known as a cardiac output. So it is also itself cardiac output is also dependent on the volume of blood. Cardiac output भी blood का volume कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. ठीक है. सो इटसेल्फ देखो ब्लड प्रेशर इक्वल टू ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. बट कार्डियक आउटपुट का इटसेल्फ का उसका ही फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू है ना स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली होता है आपका अपने देखा है फिजियोलॉजी में. सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज नियर अबाउट द 70 ml and heart rate is a 72 per beats है ना 72 minutes 72 beats per minute. So normal cardiac output is nothing but the 4800 around 5 liter. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Now any factor that will increase the cardiac output, कोई भी फैक्टर अगर है जो कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है सो वो क्या करेगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. एनी फैक्टर दैट विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस सो व्हाट विल दैट डू सो दैट विल आल्सो इंक्रीज द blood pressure because blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. देखना है आपको कार्डियक आउटपुट ये हुआ है उसके बाद में पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी इसलिए उसको स्लाइड नहीं है. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral. Any factor that will increase the cardiac output. Any factor that will increase the cardiac output. It will increase the blood pressure. Any factor that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure. Now cardiac output itself is nothing but the it is nothing but the stroke volume into heart rate. So cardiac output stroke volume into heart rate and blood pressure cardiac output into peripheral resistance. So what is resistance? So it is nothing but the resistance to the blood flow which is offered by small arteries like arterioles. Okay, right? So that's why arteries are known as a resistant blood vessels and venules they are known as a capacitance. Okay, उसके रीजन यही है. That's why we have already seen that. Now we'll see how there is a regulation of blood pressure. So you know that normal blood pressure is nothing but the 120 by 80. Okay, are you able to see the screen? दिख रहा है आपको ये? Now if there is increased blood pressure than normal, जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया नॉर्मल कितना है 120 by 80. If there is increased blood pressure than normal, so what happens? There is a CCTV camera on your in your heart. आपका जो हार्ट होता है वहाँ पे aorta जो होता है. So largest artery of your heart, that is largest artery in your body, that is nothing but the aorta. So in that aorta there is a receptors known as the baroreceptors. So you can call them as a CCTV for monitoring the blood pressure. So baroreceptor they monitors the blood pressure. So if there is an increase in the blood pressure, so baroreceptor means what? They are sensitive for the pressure. They are the pressure receptor. They are the sensitive for the pressure. ये pressure के लिए sensitive होते हैं. So they will get a signal है ना कि blood pressure बढ़ गया है अभी. तो baroreceptor क्या करेंगे? baroreceptor क्या करेंगे फिर? तो ये बोलेंगे अपना काम क्या है अपना काम है मॉनिटर करना जो भी चेंजेस हुआ है ना. जैसे वॉचमैन रखा है आपने गेट के बाहर उसका काम क्या है कि देखना है कौन है क्या नहीं है ना क्या कम ज्यादा हो रहा है. तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेगा. वो क्या करेगा पहले मालिक को जाके बोलेगा सर ये आया है अंदर भेजो ना भेजो सर ये आया है भगा दो इसको है ना. वैसे ही बैरोरिसेप्टर क्या करता है इट विल नोटिस चेंजेस it will notice a change in the pressure. So if there is increased blood pressure than normal, so your body will try to decrease it. Now how body will try to decrease it? So after the increase in the blood pressure, baroreceptors they are stimulated. So baroreceptor they will send a signal to brain via this cranial nerve number 9 and 10. So to the nucleus tractus solitarius, so which regulate the blood pressure. Now what happens? So this area stimulate the area in the brain responsible for the vasodilation, stimulation of vasodilated area. So what happens? Increase in the vagal tone means increase in the acetylcholine. It simply if there is increase in the blood vessel baroreceptor will get stimulated. They will signal to brain will analyze that signal. Brain will transmit
or brain will release the signal via vagus nerve. Vagus nerve, what will it do? Vagus nerve, you know that vagal to मतलब क्या इसमें होता है एसिटिल कोलिन ACH. You know that ACH का इफेक्ट क्या है हार्ट के ऊपर? Acetylcholine will cause bradycardia. It will cause decrease in the blood pressure. How? So acetylcholine, that is increase the vagal tone, will reach the acetylcholine, and it will depress the heart. It will cause bradycardia, decrease in the heart rate. Decrease in the heart rate result in the decrease in the blood pressure, right? So it is known as a Mare reflex. It is known as a Mare, that is cardio inhibitory reflex. जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है नॉर्मल से ज्यादा तो दिस रिफ्लेक्स कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स ये पिक्चर में आता है. So if there is increase in the blood pressure, what will happen? Stimulation of baroreceptor. Baroreceptor will recognize that signal, will transmit to the brain. There is activation of this tractus solitaris. There is an inhibitory or vasculatory area. Okay. Then there is an increase in the vagal tone. Vagal tone means vagus nerve का activity बढ़ जाता है. And acetylcholine will be released. It will cause bradycardia, that is decrease in the heart rate. And if heart rate is decreased, obviously blood pressure will decrease, that is bradycardia. Now suppose that if there is a if there is a increase in the volume of blood का volume increase हो गया, so what will happen? So blood का volume increase हो गया, so obviously blood returning to the heart. So if there is increase in the volume of blood, okay, so what will happen? So that returning of blood to the ventricles, it will also increase. So increased venous return, increased venous return will stimulate the stretch receptor in the right atrium. अगर ब्लड हार्ट में ज्यादा आ रहा है, ब्लड हार्ट में ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा? हार्ट का जो वॉल होता है, आर्टेरिया का जो वॉल होता है वो स्ट्रेच हो जाएगा. So whatever blood is increased, if venous return is increased, so there is a stimulation of stretch receptor in the atrium. So what happens? Afferent impulse through inferior vena, inferior cervical sympathetic tone, यहाँ से वो जाएगा. Afferent impulse, afferent means towards the brain. Okay, so impulse will be carried towards the brain through inferior cervical sympathetic nerve. Okay, now what that brain will analyze that signal and inhibit the vasodilation area. तो वो जो एरिया है tractus solitaris, that will be inhibited, and that's why there is a decrease in the vagal tone. Acetylcholine का level कम हो जाएगा vagal tone, and that results in the tachycardia, increase in the blood pressure. So remember, okay, increased blood pressure is because of the increase in the blood volume or increase in the venous return. एक तो यहाँ पे ये समझ में आया. Now if there is increased blood pressure, body will try to do normalize it through activation of acetylcholine or cholinergic nerve, right? Now we'll see again. So this is known as a brain bridge reflex, brain bridge reflex or cardio accelerator reflex. अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया ऑब्वियसली तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. कार्डियक आउटपुट इटसेल्फ इज नथिंग बट द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. अगर ब्लड का वॉल्यूम रिटर्निंग जो है वो बढ़ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो लास्टली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट? So increase in the blood volume, increase in the blood volume result in the increase in the venous return, which increases the right ventricular filling, increase in the cardiac output, and increase in the lastly blood pressure. So that's how blood pressure is increased. Effect of blood volume and venous return on the blood pressure. तो ये आपको अभी है, ये आपको बाद में काम आएगा ये क्यों हो रहा है. Now regulation of blood pressure in the body. How blood pressure is regulated? Okay. Now blood pressure is regulated by four mechanisms. Blood pressure is regulated by four mechanisms. First mechanism is a nervous mechanism or through nervous control. Okay. There are, you can say, there are the control. Okay. Who controls the blood pressure? Nervous control is there, renal control is there, hormonal control is there, and local control is there. Okay. So first nervous control. तो नर्वस कंट्रोल कैसे ब्लड प्रेशर का रेगुलेट होता है? कम हो गया, ज्यादा हो गया तो ये सब बाय वैसोमोटर सेंटर एंड इंपल्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्व. वैसोमोटर सेंटर, ठीक है. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वैसोमोटर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वैसोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा. बिकॉज क्या है कि आपके आवर्टा में जो है ना वहां पे क्या है, बैरो रिसेप्टर से वो सिग्नल करते हैं ब्रेन को. अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया
तो अगेन वैसोमीटर सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्लड वेसल का टोन जो है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम करेंगे। दैट इज अ नर्वस मैकेनिज्म, ओके, नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे समझ रहा है कि नहीं? यस और नो? देन दूसरा होता है रिनल मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, दैट इज अ रिनल मैकेनिज्म। So how? By regulating the extracellular fluid volume, by regulating the extracellular fluid volume via renin angiotensin aldosterone system। okay? तो जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है और ब्लड ब्लड को कंस्ट्रिक्ट भी करता है, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े। अगर ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये एक्टिवेट नहीं होता, ये सप्रेस हो जाता है। okay? So it will regulate the blood pressure by regulating the extracellular fluid volume, that is the blood volume, and by renin angiotensin aldosterone mechanism. Then third mechanism to control the blood pressure is nothing but the हार्मोनल मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म होता है हार्मोनल मैकेनिज्म। बाय हार्मोन्स कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन ना, लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा ना, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो वैसोडाइलेशन होगा नॉर्मली आपके लाइफ बॉडी में। लास्ट मैकेनिज्म होता है लोकल मैकेनिज्म, बाय रिलीजिंग द लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेटर्स, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। So by releasing the locally these chemicals, so it will try to increase or decrease the blood pressure depending upon the situation। अगर बॉडी में कम ब्लड प्रेशर हो गया तो ऑब्वियसली वैसो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली अपने देखा है वो फॉर्मूला, राइट। सो वैसे ही ये सिर्फ है ना हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, जैसे है ना सेंट्रल से, या फिर लोकल से भी हो सकता है ब्लड वेसल में, लोकल न्यूरो हार्मोन्स से नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए। सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज वैसोडाइलेटर। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा और वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, एंड दिस डायलेशन रिजल्ट द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जैसे वैसे लोकली vasoconstrictor will release this prostaglandin। So you know that blood pressure is equal to cardiac output into peripheral vascular resistance, so cardiac output into peripheral resistance। So any factor that will increase the cardiac output will increase the blood pressure, any factor that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure। अभी फैक्टर कौन है इंक्रीज करने वाली? जैसे आपके ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन हो गया, इफ देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफ देयर इज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ाने वाले कौन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट? आपने देखा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस कौन इंक्रीज करता है भाई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करने वाले फैक्टर कौन है? इफ देयर इज वैसोकंस्ट्रिक्शन पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। इफ देयर इज वैसोडाइलेशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट कार्डियक आउटपुट का क्या? So cardiac output is increased by either increase in the heart rate and force of contraction। हार्ट रेट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। या फिर इफ देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। so, कार्डियक आउटपुट बढ़ने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इटसेल्फ इज नथिंग बट द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट, ऑलरेडी आपको हुआ है। So if there is increase in the heart rate, so what will happen? Cardiac output will increase. If there is increase in the stroke volume, there is a cardiac output is increase होता है। Stroke volume means what? Volume of blood which is being pumped by left ventricle in each contraction. Okay? So it is increased by either increase in the blood volume itself. Now peripheral resistance, as I told you, if constriction of blood vessel, there is increase in the peripheral resistance. If dilation of blood vessel, there is a decrease in the peripheral. Now whole blood pressure chapter is based upon this formula. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance, right? Now we'll see again. So suppose there is again increase in the blood pressure, अगर body का blood pressure बढ़ गया then normal, so what will happen? There is a stimulation of baroreceptor and it will send a signal via cranial nerve 9 and 10, okay,
to the nucleus tractus solitaris. What will happen after this? Inhibition of vasoconstrictor area. Vasoconstrictor मतलब vasomotor, simply vasomotor center. Inhibition of vasomotor center. So what will happen? Decrease the vasomotor tone. Blood vessel का tone कम हो जाएगा. So dilation of blood vessel, and that's why decrease in the blood pressure up to normal. Okay. On the other hand, this nucleus tractus solitaris will also stimulate the vasodilator area. Stimulation of vasodilator area. तो क्या होगा? Increase in the vagal tone, and lastly blood vessel dilation होगा, bradycardia and reduction in the cardiac output. So अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कम करने वाला मैकेनिज्म ये है. ठीक है, बढ़ गया ब्लड प्रेशर, बायोरिसेप्टर हो गया एक्टिवेट. ये मैसेज करेगा ब्रेन को वाया cranial nerve 11 and 10 nucleus tractus solitaris which regulate the blood pressure. तो ये दो काम करेगा. पहला काम क्या है इसका? इनिबिशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, मतलब ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन बढ़ाने के लिए जो ब्रेन का एरिया है उसको इनिबिट करेगा. उससे क्या होगा? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और डायलेशन हो गया मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. दूसरा क्या करेगा दूसरे एंड पे? सो इट विल स्टिमुलेट द वैसोडाइलेटर एरिया. So increase the vagal tone, and that result in the bradycardia and reduction in the cardiac output, which contribute to decrease the blood pressure up to normal. So अगर blood pressure बढ़ गया तो ये changes होते हैं. Regulation of blood pressure by baroreceptor mechanism. Again, if suppose if there is a decrease in the blood pressure, कम हो गया blood pressure body में से normal blood pressure से कम हो गया. So what will happen? Again, okay. So basically there are three mechanism है ना. तीन मैकेनिज्म होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए. सो बेसिकली देयर आर थ्री मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज नोन एज सेंट्रल मैकेनिज्म. ओके, दैट इज अ मैकेनिज्म थ्रू बायोरिसेप्टर एंड नर्वस सिस्टम. सेकंड मैकेनिज्म होता है हार्मोनल मैकेनिज्म, एंड थर्ड हार्मोनल मैकेनिज्म उसको अपन रीनल मैकेनिज्म बोलते हैं. सेकंड इज अ रीनल मैकेनिज्म एंड थर्ड वन इज अ लोकल मैकेनिज्म. सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया. इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर then normal, what will happen? So that decrease in the blood pressure means what? So every organ will get less blood. So even kidney will also get less blood, right? So decrease in the blood pressure, there is a decrease in the blood flow to the kidney. Blood pressure कम हो गया, किडनी को भी ब्लड कम जाएगा. So किडनी को ब्लड कम हो गया तो वहाँ पे क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ particular type of cell known as juxtaglomerular cells will be stimulated, and this kidney will produce one hormone known as a renin. So kidney will release this renin hormone. Now this, remember, write down, it is a proteolytic hormone. ये क्या है? Proteolytic hormone. Renin is a proteolytic hormone. Proteo मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाला. तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला. तो भाई कौन से प्रोटीन? तो कौन से प्रोटीन है? तो ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है बॉडी में, एंजियोटेंसिनोजेन. So angiotensin is a glycoprotein which is inactive protein. It is broken down and to form a angiotensin 1. Renin will convert angiotensinogen to angiotensin 1. Now this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 in the blood by this enzyme ACE. ACE मतलब इक्का नहीं है ना, जंगली दमी पे आम हमारे वो वाला इक्का नहीं है. ACE मतलब angiotensin converting enzyme है ना. So it will convert angiotensin 1 to angiotensin 2. Then again angiotensinase is another enzyme which will convert angiotensin 2 to the angiotensin 3 later on. But this angiotensin 2 ये बहुत खतरनाक है. So angiotensin 2 is a vasopressor. क्या है? vasopressor, blood vessel को constrict करने वाला है. So angiotensin 2 constrict the blood vessel. So it results in the vasoconstriction, right? Again also angiotensin 2 is converted to angiotensin 3 by angiotensinase. These two also stimulate, okay, also stimulate adrenal cortex. Adrenal gland जो है उसको stimulate करता है, and that means they stimulate the release of aldosterone. So angiotensin 2 देखो, it is a potent vasoconstrictor. ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है. कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. अगेन एंजियोटेंसिन 2 ये तो करता है, उसके बाद में क्या करता है? इसको भी स्टिमुलेट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, टू रिलीज द अल्डोस्टेरोन. अल्डोस्टेरोन का काम क्या है? टू रिटेन सोडियम एंड वाटर. तो सोडियम वाटर रिटेंशन वो करने का ये. सो इट विल प्रिवेंट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. सो इन द किडनी अगर सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन कम हो गया
तो क्या होगा, मतलब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सो क्या होगा उसका, सो इंक्रीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, है ना, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम, है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, यू नो दैट, सो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो पैसिव कंस्ट्रक्शन मीन्स increase in the peripheral resistance, and at the one end, at another end it increases the blood volume, so it will increase the blood pressure up to normal. So अगर decrease हो गए तो renal mechanism आपको blood pressure regulate करता है. Are you getting or not? So if increase in the blood pressure, then again body will try to decrease it. If there is an increase in the blood pressure, body will try to decrease it. If there is a decrease in blood pressure, body will try to increase it up to normal, up to normal. Now if there is a defect in any of above, that results in the excessive blood pressure. Hypertension or blood pressure, they are of two types. First one is a primary or essential hypertension. Okay, primary or essential hypertension. First one is a primary or essential hypertension. Rise in the blood pressure, increase in the blood pressure is due to the definite cause. कुछ ना कुछ cause है, but it is unknown. इसके ऊपर as it is question आ चुका है. So if the cause of hypertension is unknown, then it is known as a primary or essential hypertension. So there are two types of hypertension: primary or essential hypertension, and then secondary hypertension. Primary or essential hypertension means there is an increase in the blood pressure, but there is a definite cause, but cause is unknown. Okay, known as a primary or essential hypertension. ये आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा. सेकंड होता है आपका secondary hypertension. Secondary hypertension. So what is it? It is a secondary to the due to different defect. Secondary to the either renal, मतलब secondary to the kidney problem. जैसे chronic diffuse glomerulonephritis, है ना, glomerulus का infection हुआ है, glomerulonephritis. So that is also one of the reason. Then again another reasons are there. Secondary to the glomerulonephritis, pyelonephritis, polycystic kidney, endocrine मतलब hormonal disturbance like Cushing syndrome, pheochromocytoma means excessive adrenaline formation, noradrenaline formation. Pheochromocytoma मतलब it is a cancer of your prostate gland. Okay? Then primary hyperaldosteronism, aldosterone का level बढ़ गया. Then any problem due to blood vessel, vascular disease, you know, this is a renal artery disease, contraction of aorta, you know. So if the cause of blood pressure is unknown, it is known as the essential hypertension or primary hypertension. Okay, essential or primary hypertension. And if hypertension is due to either renal problem, kidney का कोई दिक्कत है, blood vessel का कोई problem है, so that is known as a secondary hypertension. So hypertension because of the either problem of your renal system, problem of your heart and other blood vessel problem due to endo, है ना, problem due to endocrine secretions, that is hormonal, that is due to the that is nothing but the secondary hypertension. So primary hypertension याद रखना है, secondary hypertension. Now now 120 by 80, that is a normal blood pressure, 120 by 80. Systolic blood pressure 120 and diastolic blood pressure 80, that is known as a normal blood pressure around. Okay, but when you will say whether that person is suffering from blood pressure or not, when you will say 120, okay, 120 mm of Hg mercury millimeter, that is a systolic blood pressure. Yeah. And 80 mm of Hg, that is a diastolic blood pressure, that is a not considered as a normal. ये तो normal consider किया जाता है, diastolic 80. But when there is a hypertension, person is suffering from a mild hypertension, थोड़ा बहुत hypertension है, उसको कब बोल सकते हो आप? When a person is having diastolic blood pressure up to 120, 104 तक गया, ये diastolic blood pressure 80 बढ़ के 104 हो गया. You can say a person is suffering from mild blood pressure if his diastolic blood pressure is up to 1. So you can say a patient is suffering from moderate blood pressure if his diastolic blood pressure rises from 80 to 105 to 114, 105 से लेके 14 तक अगर हो गया, मतलब ये रेंज में होता है, so moderate. But you can say the person is having severe hypertension if diastolic blood pressure is increased up to 115, 115 तक गया ना blood pressure, so that is a severe hypertension.
So most accurate measure for blood pressure is a diastolic blood pressure. तो systolic से ज़्यादा diastolic blood pressure measure करते हैं. You can see over here blood pressure chart. So hypertension कब होगा, hypertension कब होगा? When you can say a person is suffering from hypertension, or when you can say person is suffering from hypertension. So first hypotension. Hypotension means what? Hypo means low, है ना? So if there is a decrease in the blood pressure, then normal, known as hypertension. And if there is an increase in the blood pressure, then normal, known as hypertension. तो hypotension कब होगा? Hypotension मतलब low blood pressure. So if systolic blood pressure is less than 80, नॉर्मली कितना होता है 120, एंड इफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 60, नॉर्मली कितना होता है 80. सो इफ 80/60 अगर ब्लड प्रेशर है उसका, तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, कम ब्लड प्रेशर. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल तो आपको मालूम है 80 एंड 120, और 80 to 120 क्या है, सिस्टोलिक होना चाहिए. डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 60 to 80, बट अपन 80/120 नॉर्मल लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय प्री हाइपरटेंशन? प्री हाइपरटेंशन मतलब क्या, 120 से लेके 140 तक अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये पर्सन इज हैविंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 139 mercury millimeter. So that is a okay, that is a pre-hypertension. If diastolic blood pressure is up to 90, जब 90 हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसको बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट किसको बोलेंगे? If systolic blood pressure is around 140 to 160 and diastolic blood pressure is around 90 to 100, so that is known as hypertension stage 1. Hypertension stage 2, if systolic blood pressure of patient is more than 160 and diastolic is more than 100, so it is a hypertension stage 2. Very high very high blood pressure or hypertensive crisis. Okay? So if systolic blood pressure of patient is more than 180 and diastolic is more than 110, 110 से ज़्यादा डायस्टोलिक है ना, यहाँ पे देखो वैसे ही, नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. तो ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर है ना, आपको ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ता है इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, सो योर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. ये तो आजकल क्या है कि स्मार्ट वॉच का जमाना है ना, कोई भी आपको गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब दिखता है. तो आपको लगता है बहुत ही अपना अपना बहुत ही हेल्दी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो आपको लगता है मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे तो हाइपरटेंशन हो गया, चलो डॉक्टर के पास. डॉक्टर को क्या है, वो तो मौका पास थे ना, उसके लिए तो बैठा है. उसने इतना बड़ा कांच का रिसेप्शन लगा के रखा है, वहाँ पे पेपर है, वहाँ पे एसी लगा के रखा है, क्यों लगाए? अगर आप आओ, आपको लूटने के लिए बैठे ना वो. तो आप क्या करते हो, आपको नहीं नहीं ब्लड प्रेशर, अरे यार भागने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना आपका. आप गए वहाँ पे, है ना, आजकल ना है ना हेल्थ कॉन्शियस, है ना, बहुत सारे डॉक्टर है ना, टेलीविजन डॉक्टर, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर अनुष्का शर्मा, है ना, बहुत बड़े बड़े स्टार डॉक्टर बन के चाहिए. कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया पीएचडी उन्होंने, या फिर वहाँ से एमबीबीएस एमडी किया, मालूम नहीं, बट है वो, है ना, वो जो आपको बोलते रहते हैं, है ना, सेंसोडाइन वाला, वो एक डॉक्टर है, कहाँ से क्या मालूम. बहुत सारे डॉक्टर है टेलीविजन, यूट्यूब के ऊपर तो बड़े, यूट्यूब के ऊपर तो इतना बड़ी मार है डॉक्टरों का कि कोई भी आकर आइए जान लेते कील मुहासों का इलाज 100%, है ना, आइए जान लेते हाइपरटेंशन का इलाज 100%. तो उसके भी फम के 3 बैग है. तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है. तो यूट्यूब डॉक्टर एंड टेलीविजन डॉक्टर वो सब, है ना, वो डॉक्टर नहीं. ठीक है. सो ब्लड प्रेशर अगर आपका थोड़ा बहुत बढ़ गया तो आप डॉक्टर के पास जाओगे फिर से. तो एक्चुअली if your blood pressure is around 140 systolic, okay, 130 140, अगर वो है, अगर आपको अभी चेक किया, आपने भाग लिया, आप बहुत ट्रेडमिल के ऊपर, ब्लड प्रेशर चेक करो 140 तक जाता है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाना है, रुको जरा, है ना, सब्र करो, है ना, रुको सब्र करो, है ना, जैसे रिलैक्स हो जाओगे आप, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. हाँ फिर भी नहीं कम हो रहा है ना, एक हाफ एन आवर रिलैक्स हो जाओ आप, है ना, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा. नहीं हो रहा है फिर डॉक्टर के पास जाओ. नहीं तो फिर क्या है, भागते भागते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वॉच ने दिखाया 160, है ना, आपको लगा आपका हार्ट फेल ही होगा, भाग लिए डॉक्टर के पास. उसको क्या है, डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे एसी पीसी वो बोलता है वेट करो 5 मिनट, बाद में चेक करेगा तो ब्लड प्रेशर भी नहीं. आपको बाद में क्या करेगा फिर, हाँ बैठा देगा उसके कॉट के ऊपर, एक थोड़ा सा चेक करके फिर एक आधा आईवी लगा देगा, हो गए, आपको लगा बच गए. So you have to understand this. Okay. Again, if there is a increase or decrease in the blood pressure, कैसे कंट्रोल होता है और एक बार समझो.
If there is a decrease in the blood pressure, so there is stimulation of baroreceptor, because they are the pressure sensitive receptor on the in the aorta. Okay, so okay, stimulation of baroreceptor, अगर blood pressure कम हुआ है तो baroreceptor stimulate होता है and वो brain को signal करेगा. Brain क्या करेगा? Brain will activate the sympathetic nervous system. It will activate the sympathetic nervous system, means it will release the noradrenaline simply. So what will happen? So stimulation of vasomotor center by baroreceptor. Okay, and what that result in the then decrease in the decrease in the stimulation of vasomotor center by baroreceptor, then increase the activity of parasympathetic activity increase होगा, sympathetic activity increase होगा. There is activation of beta 1 receptor on heart, which will increase the heart rate and cardiac output. Okay, and due to alpha receptor, noradrenaline will act on alpha receptor, and which will cause vasoconstriction, vascular smooth muscle जो होता है blood vessel का, उसको constrict करेगा. So constriction of blood vessel that increases the peripheral resistance, and stimulation of beta 1 receptor by noradrenaline on the heart will increase the heart rate and force of moderation, that is cardiac output. So increasing the peripheral resistance, increase the cardiac output, will increase the blood pressure. So if blood pressure is decreased, तो सिंपली याद रखना है कि ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बारोरेसेप्टर को बारोरेसेप्टर स्टिमुलेट होगा, वो बोलेगा ब्रेन को, बड़े मियाँ यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो गया है, कुछ तो भी करो. बड़े मियाँ क्या करेगा, एक तो क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा. सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा मतलब क्या कि नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा. नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट में जाके बीटा उनको स्टिमुलेट करके हार्ट रेट परसोमोटेशन बढ़ेगा. अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. So you can see over here control of blood pressure. Arterial pressure is the function of cardiac output and peripheral resistance, as I told you. Blood pressure is controlled by two mechanisms. First one is known as the sympathetic nervous system, that is sympathetic nervous system or adrenaline. So acute changes in the blood pressure, acute changes, थोड़ा बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है. So acute change in the blood pressure, that is counteracted by baroreceptor, okay, influenced by adrenergic nervous system. अगर blood pressure थोड़ा कम हुआ है इन शॉर्ट टर्म के लिए तो एड्रेनालिन रिलीज होगा, अगर ज़्यादा हुआ है तो एसिटिलकोलिन रिलीज होगा. ओके, ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल है. ओके, सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल. तो याद रखना एक क्वेश्चन आता है कि अल्टरेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अ शॉर्ट टर्म, that is controlled by which mechanism? Okay, so that is controlled by baroreceptor and sympathetic nervous system mechanism. Basically short term regulation of blood pressure, ये क्या है, short term regulation of blood pressure by baroreceptor and adrenaline or sympathetic nervous system. Short term regulation. Okay. Now long term regulation. Long term regulation is done by this renin angiotensin aldosterone. Slow regulation is there, but long term regulation, of arterial blood pressure. So what happens if there is decrease in blood pressure? Kidney will get less blood. Kidney will release one hormone. Kidney will release one hormone known as a renin. Renin is a proteolytic, it's not hormone. Renin is a proteolytic enzyme released by juxtaglomerular cells of kidney. याद रखो juxta, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Renin is produced by which cells? Juxtaglomerular cells of kidney produce renin, which is a proteolytic enzyme produced in the kidney in response to the decreased renal perfusion. अगर किडनी को ब्लड फ्लो कम हो गया तो रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है. दूसरा, decreased supply of sodium to the macula densa, मतलब क्या, किडनी का जो मिडल लेयर होता है उसको अगर मैकुला डेंसा मतलब वही, if your kidney is getting less sodium, so again renin release, because renin release होके बाद में angiotensin second वो stimulate करता है aldosterone. Increase in the adrenergic activity, increase in the sympathetic activity and certain hormonal factors. So, okay. So short term regulation is done by adrenaline or sympathetic nervous system and baroreceptor mechanism. Long term control on blood pressure is exercised by renin angiotensin aldosterone system. Now what happens, release of renin will activate inactive glycoprotein. एक glycoprotein आपके ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन होता है इनएक्टिव, एंजियोटेंसिनोजेन. सो एंजियोटेंसिनोजेन is converted into angiotensin. Okay, so reaction between renin
renin and angiotensinogen. So ये क्या होता है? Angiotensinogen is a globulin, okay, present in the plasma or serum that result in the synthesis of angiotensin 1. तो angiotensin 1 बनेगा, है ना? Angiotensin 1, what is that? It is a decapeptide. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Angiotensin 1 is a decapeptide. Now which angiotensin 1 during the passage through a lungs? अभी देखो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 in which organ? आपको लगता है लिवर, आप किसी को लगता है ब्लड, नहीं, वो लंग्स में आता है. So angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 while traveling through a lungs. Okay, angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. उस एंजाइम होता है यहाँ पे angiotensin. और angiotensin 2 is a octapeptide. Angiotensin 2 is converted into angiotensin 3 and 3 is a heptapeptide. तो याद रखना है 3 जो होता है वो हेप्टापेप्टाइड होता है, हेप्टापेप्टाइड. तो angiotensin फर्स्ट इज अ डेकापेप्टाइड, सेकंड इज अ ऑक्टापेप्टाइड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है दोनों के ऊपर. ओके, एंड angiotensin 3 जो बनता है वो दैट इज अ हेप्टापेप्टाइड. angiotensin 3 जो बनता है लास्ट में दैट इज अ हेप्टापेप्टाइड. नाउ angiotensin सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर. क्या होता है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है एंड आल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन. So angiotensin second is converted into angiotensin 3, that is a heptapeptide, and which is also equipotent as that of the angiotensin 7. So basically ये क्या करेगा? Angiotensin second peripheral resistance बढ़ाएगा and water and sodium retention बढ़ाएगा by stimulating the aldosterone. You know? Now kidney plays important role in the regulating the blood pressure via angiotensin aldosterone system. It is also known as the angiotensin aldosterone axis और रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. इसको दो तीन नाम है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज रास, RAAS. और इट इज आल्सो नोन एज एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस. एंड other important points in regulation. If there is a deficient vascular synthesis of nitric oxide, अगर ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो गया, so उसमें भी हाइपरटेंशन होता है. So what is nitric oxide? So nitric oxide is known as endothelial derived relaxing factor, EDRF. Endothelium derived relaxing factor, EDRF. So it is synthesized locally in the blood vessel and responsible for the vasodilation. ये blood vessel को dilate करता है. It has been observed that there is a deficiency of nitric oxide in the hypertensive patient. इनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कमी होता है. ठीक है. And there is a positive correlation between total body sodium and blood pressure. मतलब क्या कि जितना बॉडी का सोडियम बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. So positive correlation between sodium and blood pressure and negative correlation between total body potassium and blood pressure. मतलब जितना पोटेशियम कम होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना सोडियम बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जितना पोटेशियम कम होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट में पाया गया है. अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलते हैं डॉक्टर कि आप नमक मत खाओ, है ना. जिसको भी देखो डॉक्टर लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं अपने को, है ना. कोई बोलता है कोलेस्ट्रॉल मत खाओ, कोई बोलता है शुगर मत खाओ, कोई बोलता है ना, नमक मत खाओ, कोई बोलता है ये मत खाओ, कोई बोलता है नॉन वेज मत खाओ. अरे खाए तो क्या खाए, मर जाए भाई, है ना. तो बहुत डॉक्टर लोगों ने बहुत परेशान करके रखा है अपने को. तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टोटल बॉडी सोडियम एंड ब्लड प्रेशर. सोडियम बढ़ गया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन पोटेशियम एंड ब्लड प्रेशर, पोटेशियम कम हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इन अ हाइपरटेंसिव पेशेंट. Now in some patient essential hypertension is related with insulin resistance with the resultant hyperinsulinemia. कुछ पेशेंट में जो essential hypertension है वो इसके कारण भी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण. उनमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन होता है लेकिन उसका इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन इट इज यूजलेस, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, रेजिस्टेंस हुआ है, तो हाइपर इंसुलिनेमिया होता है उसमें, and that is also related to that essential. Then synthesis of abnormal steroid, hybrid between cortisol and aldosterone. तो उनमें क्या है, जेनेटिक डिसीज के कारण या फिर कुछ डिफेक्ट के कारण जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है वो भी डिफेक्टिव बनता है, उसमें भी इसके कारण भी हाइपरटेंशन होता है. And condition is known as a GRA, glucocorticoid remediable aldosteronism, GRA, है ना.
that condition abnormal synthesis of steroid, okay, hybrid between cortisol and androsterone, ये दोनों के बीच का स्ट्रक्चर बनता है, and that condition is known as a GRA, glucocorticoid okay, remediable, okay, remediable aldosteronism. Are you getting or not? Are you getting or not? है ना, आपने देखा इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर, नाउ डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, सो डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, decrease in the blood pressure हो गया, so what will happen? Your body will try to increase the blood pressure. How? By activating this RAS, renin angiotensin aldosterone system. So RAS को एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है? Okay, जैसे कब एक्टिवेट होता है? जैसे decrease in the renal flow, decrease in the renal flow, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. तो decrease in the renal flow मतलब किडनी को ब्लड फ्लो कम है, तो ये सिस्टम तो एक्टिवेट होगा ही. उसके बाद में अगर किडनी में ब्लड कम जा रहा है तो ब्लड फिल्टर भी कम होगा, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज इन द जीआरएफ. ओके, ये दो चीजें, डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, डिक्रीज इन द जीआरएफ. सो व्हाट विल हैपन, डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी, इट विल स्टिमुलेट द रेनिन रिलीज. सो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी, रेनिन सिक्रेशन विल बी इंक्रीज्ड, रेनिन इंक्रीज होगा सिक्रेशन बाय द एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी. तो ये क्या करेगा, इट विल, ओके, इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1, okay, angiotensin to angiotensin 1, angiotensin 1 will be converted to angiotensin second by ACE, angiotensin converting enzyme. angiotensin second क्या है, vasopressin. और ये angiotensin second और एक काम करता है, इसको भी स्टिमुलेट करता है, अल्डोस्टेरोन को प्रोडक्शन बढ़ाता है. और ये क्या करेगा, सोडियम वाटर किडनी में एक्सक्रीट नहीं होने देगा, मतलब रिटेन करेगा. and that's why angiotensin second is a vasoconstrictor at one hand, at another hand it increases the एक्टिविटी ऑफ aldosterone, मतलब ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस करेगा, बढ़ाएगा, राइट. सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा, उसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. एंड इवन दैट कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. दैट्स हाउ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या होगा, ये सब होगा. डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर हो गया तो ये सब होगा. आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं आपको? Yes or no? Okay. So again you can see sites, okay, site of action of anti-hypertensive drug. कि anti-hypertensive drug, blood pressure control करने वाले drug कहाँ पे act हो सकते. So what are the different sites for action of anti-hypertensive drug? So some drug will act on a centrally, known as central anti-hypertensive drug. Okay? Central sympatholytics. क्योंकि आपको मालूम है कि आपको ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बढ़ने के लिए क्या कर रहा है बॉडी, कि ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन वहां से एड्रेनलिन रिलीज करता है, ब्रेन वहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन करता है, मतलब देयर इज अ रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन. सो उसको ब्लॉक करो तो वहां पे भी बहुत बहुत चांसेस है, आप क्या क्या कर सकते हो. जैसे यू कैन प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनलिन, यू कैन डिप्लीट द नॉर एड्रेनलिन, यू कैन प्रिवेंट द नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम एक्टिंग ऑन अनदर न्यूरॉन दैट बाय ब्लॉकिंग द गैंग्लिया, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है ना. देखो यहाँ पे ही क्लासिफिकेशन ज्यादा कैसे समझना है, क्लासिफिकेशन ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन इजीली रिमेंबर द क्लासिफिकेशन. व्हाट यू डू, यू नो दैट दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द हाइपरटेंशन, है ना. ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए मदद कर रही है. वैसे अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया बॉडी का, बॉडी क्या करेगी, बोरेल रिसेप्टर विल स्टिमुलेट द ब्रेन टू एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड यू नो दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, नॉर एड्रेनलिन. तो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा, है ना. सो उसको रिलीज मत होने दो, क्योंकि आपको क्या है, ब्लड प्रेशर है, आपको हाइपरटेंशन है, तो रिलीज नहीं होने देने के लिए क्या कर सकते हो, उसको भी मालूम होना चाहिए. सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट द रिलीज, यू शुड नो हाउ देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, हाउ इट इज स्टोर्ड, हाउ इट इज रिलीज्ड, है ना. सो ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है. सो फॉर catecholamines we have already seen in the sympathetic nervous system, so they are synthesized from phenylalanine or tyrosine. Okay, then tyrosine to dopa, dopa to dopamine, dopamine to noradrenaline, lastly adrenaline, you know. Then they are stored in the scientific vesicle, they are released upon signal, you know. तो क्या करना है कि पहले सिंथेसिस में बताऊं तो, सो फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर इसको मेटायरा में अगर सिंथेसिस हो गया तो स्टोरेज है ना, वहां से हकल दो. You can deplete the catecholamines. So example is a reserpine, catecholamine depleter second class, ठीक है. अगर स्टोरेज हो गया है ना, स्टिमुलस भी आ गया, रिलीज भी हो गया, है ना. रिलीज होने के बाद में क्या होता है, यू नो दैट आफ्टर रिलीज देयर इज अपटेक, सम पार्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज अपटेकन,
some part of neurotransmitter will act on a post synaptic membrane, some part of neurotransmitter will be metabolized. तो उसको metabolism increase करो तो obviously you can increase the metabolism, you can increase the uptake, है ना. देन अगेन एक्ट होगा पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर. तो दो सिनेप्स के बीच में जो जंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लिया. तो उसको ब्लॉक करो, गैंग्लियोनिक ब्लॉक कर यूज करो. अगेन नेक्स्ट क्लास. अगर लास्टली को आज तक कुछ नहीं किया आपने, वो नॉरएड्रेनालिन आएगा कहाँ पे, उसके ऑर्गन्स के ऊपर. व्हाट आर द ऑर्गन्स, लाइक हार्ट है आपका, ब्लड वेसल्स है आपका. तो हार्ट में होता है बीटा 1 रिसेप्टर, ब्लड वेसल में होता है अल्फा 1 रिसेप्टर. तो उसको ब्लॉक करो, बीटा ब्लॉकर्स यूज करो. उसमें 2-4 क्लासेस होता है, आप देखेंगे. या फिर आप उसके बाद में क्या है कि वो वही नॉरएड्रेनालिन आपका ब्लड वेसल के ऊपर आ जाएगा, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. तो उसको ब्लॉक करो, है ना. अल्फा ब्लॉकर्स, उसमें भी 2 टाइप होता है, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, है ना. उसके बाद में तो आपको मालूम है ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, ये अपनी बाद में ये. ओके. उसके बाद में फिर से यहाँ तक अगर आपने ब्लड प्रेशर रोक नहीं सकते, अगर आप you cannot prevent the synthesis, you cannot prevent the storage, you cannot prevent the release, you cannot block the ganglia, you cannot block the adrenergic neuron. Okay, then you cannot block if you are not blocking beta receptor, if you are not blocking alpha receptor. मतलब होता है ना कि लाइफ में बहुत फेल्यूर है कि आप फेल हो गए कहाँ पे, सिंथेसिस में ही फेल हो गए, उसके बाद में स्टोरेज में फेल हो गए. चलो बाद में ट्राई किया कि आप बाद में तो, है ना, बाद में रिलीज में फेल हो गए, बाद में गैंग्लिया में फेल हो गए, बाद में एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में फेल हो गए. मतलब ये सब क्या है, एक क्लासेस है. देखो इतने ही क्लास है ना, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट, है ना. या फिर बाद में रिसेप्टर ब्लॉक करो, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, यहाँ भी फेल हो गए. तो क्या है दूसरा एक ऑप्शन आपको, आप जाओ किडनी में. किडनी में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन, है ना, रेनिन एक्टिवेट होगा. रेनिन एक्टिवेट होने के बाद में एंजियोटेंसिन में 1 बनेगा, उसके बाद 2 बनेगा. तो देखो इसको ब्लॉक करो, ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं. कैसे, है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड इज वैसोप्रेसर, ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है. क्यों, बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड आल्सो इंक्रीजेस द सोडियम वाटर रिटेंशन बाय स्टिमुलेटिंग द अल्डोस्टेरोन व्हिच आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम. तो ब्लॉक करो. पहले तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हो रेनिन एंटागोनिस्ट यूज करके. सेकंड, अगर ये नहीं कर सकते तो सेकंड एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसको ब्लॉक करो बाय ब्लॉकिंग द एस, बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2. तो एस इनहिबिटर्स इसमें यूज कर सकते हैं. अगर ये भी यहाँ पे फेल हो गए आप, तो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसके रिसेप्टर जो होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करो. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, है ना. तो यहाँ से कर सकते हो. यहाँ पे भी फेल हो गए तो अल्डोस्टेरोन जो होता है उसका एंटागोनिस्ट यूज करो. मतलब 25 क्लासेस तो एज इट इज आपको आने चाहिए, है ना, क्लासेस तक के. तो इजीली होता है. दीज आर द टारगेट्स. ओके, ये हो गए टारगेट्स. ठीक है. बाद में इसके ऊपर भी फेल हो गए सबके ऊपर, क्या कर सकते हो, आपको मालूम है पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे होता है, बिकॉज द वैसो कंस्ट्रिक्शन. अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो पेरिफेरल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. तो उसको ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट मत होने दो, बजाय उसको डायलेट करो. तो यूज वैसो डायलेटर्स. तो इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं ना, आर्ट्रियोलर डायलेटर, वेनोडायलेटर, आर्ट्रियोलर प्लस वेनोडायलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बहुत सारे. These are the targets for anti-hypertensive drug. Are you getting or not?